Hello students, today we are going to look for class 7 maths multiple choice question revision session for chapter number 8 to 15. I recommend you to watch this video after completion of all the concepts from chapter number 8 to 15. So without wasting any time, let us jump to multiple choice question. Question number 1. 1 by 5 as percent is dash. See, whenever you have to convert a fraction into a percentage, always multiply it by 100%. So, when you will be cancelling it, you will get 20% as your answer. So, option number B is the correct answer. Next one, minus 7 upon 2 is equal to question mark upon 14. Then what? See, question mark is what? So, in this kind of questions, you have to do the cross multiplication. सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फाइन, माइनस 7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14. 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ 49, बट माइनस इज ऑल्सो देयर, सो माइनस 49 इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 126 is to 62 is dash. Now see, you have to reduce it. So 126 upon 62 को अगर आप reduce करोगे, हम इसे 2 से कट कर लेते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2. So your answer is 63 is to 31. Option number C is the correct answer. Next one, the ratio of 10 days to 40 hours is dash. That is what 10 days to 40 hours. Fine. So see, in 1 hour, first of all, always remember, whenever you have to find out the ratio, you need to convert both the numbers into the same unit. तो एक है आपका डेज और एक है आवर्स. हम एक काम करते हैं, इस डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 24 इज़ टू 40. Now instead of multiplication, you just cut here. 10 1s are 10, 10 4s are 40, 24 is to 4, that is 4 1s are 4, 4 6 are 24. So the answer is 6 is to 1 is the correct answer. Fine, here you can see I have done the solution. The cost of 7 kg of potatoes is rupees 42. How many kg of potatoes can be purchased for rupees 96? सो सी एवरीबडी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 7 kg पटेटोज़ का कॉस्ट आपका है 42 रुपीज़. 96 रुपीज़ में कितने kg ऑफ पटेटोज़ यू कैन परचेज़? फॉर दिस यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 96 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 42. 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42. Then 96 divided by 6 is 16 kg. So your answer is option number D. Next one, 1 by 4 as percent is dash. Again, whenever you have to convert a percentage into a fraction into a percentage, then always remember multiply by 100%. 4 1s are 4, 25s are 100%. So 25, option number A is your correct answer, 25%. Circumference of a circle is dash. See, learn all the formulas of the mensuration chapter. They are going to play a very important role as per the examination point of view as well as in the higher classes. Circumference of a circle is what? 2 pi r. So option number B is the correct answer. Next one, area of a circle is dash. Area of a circle, that is what? Inside part of the circle. इसका formula आपका क्या हो जाएगा? pi r square. Option number A is the correct answer. Then area of a square is L cross L. Next one, area of a square plot is 8100 meter square. Find the side of the plot. Now you have to find out the side of the plot and area has been given, that is L multiply L is equal to 8100. L square is equal to 8100. L is equal to under root of 8100. Okay, so it is what? 90 meters. ओके, बिकॉज 9 9s are 81 एंड 00 इज़ देयर, तो सिंगल ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.
Next one, circumference of a circle is 88 centimeter, so its radius is dash. Now circumference is given, okay, and see, whenever no value of pi has been given, at that time use pi is equal to 22/7. ओके, सो c इज इक्वल टू 2 pi r, ये हमारा फॉर्मूला है. सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 88 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r. सो 22 multiply 2 is 44. 44 ones are 44. 44 twos are 88. Then 2 sevens are is 14. So your answer is radius is 14 centimeter. Option number A is the correct answer. Next one, simplify p plus into bracket p minus q plus q minus into bracket q minus p. इसको हमें simplify करना है. कैसे करेंगे? Open the brackets first of all, and after opening the bracket, this is minus, so after opening the bracket, this minus p will be converted into plus p. Okay, p plus p minus q plus q minus q plus p. now आपको पता होना चाहिए कि जब इन्वर्स साइन होती है और सेम आपका टर्म होता है तो वो कैंसिल हो जाता है. माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, देन p plus p, that is 3 times p and minus q. So your answer is 3p minus q. That is option number A is the correct answer. Next one, how many terms are there in the expression 4x minus 3y plus z? इसमें कितनी terms है? 4x is one term, minus 3y second term, plus z is the third term. So there are how many terms? There are 3 terms. Fine. Next one, how many terms are there in the expression 4x minus 3y? There are 2 terms, 4x and minus 3y. There are how many terms? 2 terms. Next one, which of the following expression is monomial? Monomial, it means what? The expression which is only one term. ओके, वन टर्म जिसमें हो ऐसे एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं. बाइनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज़ 2 terms एंड ट्राइनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज़ 3 terms. सो दिस इज़ 3 terms, तो ट्राइनोमियल हो गया, 2 terms बाइनोमियल हो गया, एंड हमें मोनोमियल पूछा है, सो दिस इज़ मोनोमियल, ओनली वन टर्म 4x. Option number C is the correct answer. Next one, what is the coefficient of x in the expression minus 4x minus 4y? It will be what? Coefficient is the number attached to the variable. So that is minus 4. So your answer is option number A. Next one, what is the coefficient of x in the expression 2 minus x plus y? That is माइनस एक्स. तो इसके साथ आपको देखना है कि कुछ भी अटैच नहीं है, मतलब -1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा. सो योर आंसर इज -1. Okay, see, in this many of the students are writing 1 as the coefficient, but remember that you have to take the sign also in consideration. So -1 is your perfect answer as coefficient. Next one, 3 raised to 0 multiply 6 raised to 0 multiply 8 raised to 0 is equal to dash. See, anything raised to 0 is 1, always remember. So 1 multiply 1, यहाँ पे कुछ भी आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, लेकिन अगर आपका रेज टू में 0 है पावर, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है. ओके, कुछ भी दे रखा है, लाख भी दे रखा है, अंदर 1 लाख दे रखा है तो भी. ओके, सो 1 multiply 1 is 1. So your answer is 1 and not 0. Okay, find the value of the expression, that is 19x minus 12 for x is equal to 1. It means करना क्या है, आपको x is equal to 1 रखना है इसके अंदर. So क्या हो जाएगा, 19 multiply 1 minus 12, that is 19 ones are 19. 19 minus 12 is what? 7. Okay, 7 is the correct answer. Subtract 4mn from 10mn. Okay, so 10mn minus 4mn. Okay, it will be what? 6mn. 6mn is the correct answer. Next one, find the value of the expression 4x square plus 2 into bracket y minus 2 for x is equal to 1 and y is equal to 2. It means आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखनी है एंड y की वैल्यू आपको 2 रखनी है. सो द एक्सप्रेशन इज दिस. ओके, 4 multiply x plus 2 इंटू ब्रैकेट y की जगह हम 2 रखेंगे. 2 minus 2 is 0. सो ये पार्ट तो आपका पूरा कट हो जाएगा. 4 multiply 1 that is 4. So 4 is your correct answer. Option number A is the correct answer. Okay, next one, how many lines of symmetry
आर देयर इन सर्कल. ओके, सर्कल में कितनी लाइन्स होती हैं? जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें आपकी देखो ऑल द डायमीटर्स आर नोन एज द लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ से अगर आप कोई भी लाइन पास करोगे सर्कल में से, सेंटर पॉइंट में से, वो आपका सिमेट्री ही होगी. ठीक है, मतलब सर्कल को कैसे भी हम फोल्ड करें इस लाइन पे से, दैट विल बी सिमेट्रिकल. सो यू कैन से इट हैज़ number of lines that is uncountable, so it is infinite lines of symmetry exist in case of circle. Answer is option number C. Next one, how many lines of symmetry square have? स्क्वायर में कितनी होती हैं? जैसे ये स्क्वायर है, ये सेंटर है, तो स्क्वायर में आप अगर देखेंगे 1 2 3 and 4, there are how many lines? 4 LOS. Okay, there are how many LOS? 4 LOS are there in circle, in square. Okay, next one, how many lines of symmetry a rectangle have? rectangle में कितना होता है? 2 lines. This is a rectangle, this is center, वन लाइन लाइक दिस एंड वन लाइन लाइक दिस. ओके, इसमें आप डायगोनल की जो लाइंस हैं वो सिमेट्री में नहीं कंसिडरेशन में आती हैं, क्योंकि अगर हम इसको रेक्टेंगल को डायगोनली फोल्ड करेंगे इट विल नॉट बी ओवरलैपिंग. फाइन, सो देर आर ओनली 2 लाइन्स. रिमेंबर दिस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स राइट हियर 4 इज द आंसर, बट दैट इज रॉन्ग. 2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री equilateral triangle has? Equilateral triangle, okay, it means all the 3 sides are same. So in the case of equilateral triangle there are 3 lines of symmetry. Okay, 3 is the right answer. Next one, the exponential form of 256 is dash. ओके, अब इसका आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है, तो आप इसका 256 का फैक्टराइजेशन करोगे. ओके, 2 128 of 256, 264 equals to 128, 232 is equal to 64, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Count the number of 2s, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So that is 2 raised to 8 is the exponential form of 2 raised to 56. Next one, 300% of 25 is equal to 25% of dash. सो देखो इन सम्स में आपको ज़्यादा कुछ माइंड अप्लाई नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू, 300% ऑफ 25 इज इक्वल टू 25%. अगर आपको यहाँ पे ये दे रखा है तो बस ये जो सेकंड वाला है ना नंबर, वो इसका आंसर हो जाएगा 300. फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ एजेस इन क्यूबॉइड और क्यूब इज़ डैश. सी, क्यूबॉइड और क्यूब में हम नंबर ऑफ एजेस की बात करें, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द क्यूबॉइड. ओके, एंड इसमें आप नंबर ऑफ एजेस आपको देखना है, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4. ओके, देन 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर. नंबर ऑफ फेसेस अगर इसमें पूछें तो फेसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 then 3 4 5 6. How many faces? 6 faces. So always remember, faces आपके क्यूब हो या क्यूबॉइड हो दोनों में सेम ही रहेंगे. नंबर ऑफ वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स की अगर बात करें तो जैसे ये हमारे पास क्यूब है, कॉर्नर्स इसके कितने हो जाएंगे? से this is a cube and you need to find out the corners. It will be what? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 corners. Okay, so option number A is the correct answer. Whether it is a cube or cuboid, दोनों में आपके corners same रहेंगे. Next one, the ratio of 14 hours is to 56 hours is dash. So 14 is to 56. That is what? Which option will be the correct answer? See, 14 and 56. 2 7s are. So here your answer will be 1:4. Okay, 14 upon 56. 14 1s are 14. 14 4s are 56. Okay, here it is written. By mistake I have written 5. 1:4 is the correct answer. Okay, so this was all about for today. I hope everybody enjoyed and liked the video. If you have any doubts, you can comment me in the comment section.
Else, stay tuned, share this video among your friends, and subscribe my channel for more such videos. In the next video, I'll be bringing more such MCQs which is remaining in this revision session. Else, thanks for watching my video.